Sat Shri Akal. You all are watching me at Punjab Times. I'm Namita Suchdev with you, and today I have with me one of the most finest actors of film industry. Yes, I'm talking about Bengali and Hindi film actor, Mr. Parambrata Chattopadhyay. Param, welcome to Punjab Kesari. How are you? Thank you very much, Namita. How are you? Absolutely good. अभी और अच्छी हो गई हूँ आपसे मिलके. क्या बात है? So, Param, we have seen the trailer of Jehanabad. You're looking good, like really nice. And as I said, that you're one of the finest actors. Actor तो हो ही, director भी हो, producer भी हो, मतलब सब आप कर लोगे तो बाकी क्या करेंगे? बड़ी खुशी हुई है मुझे ये सुनकर के आप एक पहली बात तो ये मैं बताऊंगा कि यू एक्चुअली मेंशन समथिंग व्हिच आई रियली अप्रिशिएट वो ये है कि आपने बताई कि बंगाली एंड हिंदी फिल्म एक्टर बिकॉज आई हैव डन फेयर अमाउंट ऑफ वर्क इन हिंदी बाय नाउ एंड व्हेन पीपल स्टिल कॉल मी दैट Bengali actor. I said, okay, great. I'm from Bengal. I've started my career and for so many years, I've done Bengali work, but I've also done fair amount of Hindi work. So it's good to be recognized for that. Thank you so much for like getting my point really Yeah, at point. yeah, correct. Yes. तो पहले तो मुझे जहानाबाद के बारे में ही बता दीजिए कि how did it happen to you? See, एक दिन मुझे एक मैसेज आया मेरे पास फ्रॉम द डायरेक्टर तब ऑब्वियसली तब मुझे पता नहीं था कि ये डायरेक्टर साहब है राजीव बांडवाल करके एंड ही सेड दैट परम आई एम मेकिंग दिस सीरीज आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग आई सेड श्योर प्लीज लेट्स गो एंड तब जाके उन्होंने जो कहानी उन्होंने सुनाई मुझे आई वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटेड विद द स्टोरी एंड द फैक्ट द रीजन मैं फैसिनेटेड हुआ मैं उसके उसके पीछे कई सारे वजह है एक तो ये है कि मैं आई एम फ्रॉम बंगाल राइट सो बिहार झारखंड बंगाल हालांकि बिहार और झारखंड कुछ 20-25 सालों पहले तक अलग नहीं थे एक ही थे सो दैट पार्ट ऑफ द कंट्री वी हैव हैड अ लॉट ऑफ अल्ट्रा लेफ्ट एक्टिविटीज मतलब लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स का एक दायरा रहा है वहां पे और हम काफी फेमिलियर है उससे एंड दिस इज वन स्टोरी विच Rajiv and Satyanshu they had based it against the backdrop of leftist politics, class struggle, caste politics in Bihar in 2004-5 and ये ऐसा एक ऐसी एक इंसिडेंट से इंस्पायर है ये स्टोरी जिसके बारे में मुझे पता था पहले से आई हैड रेड अबाउट इट एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी मेरे यूनिवर्सिटी के दिनों में मेरी यूनिवर्सिटी भी काफी पॉलिटिकली एक्टिव थी तो आई न्यू अबाउट दैट इंसिडेंट एंड आई वांटेड टू नो दैट इन्होंने कैसे अडेप्ट किया है इनको इसको इतनी एक पॉलिटिकली चार्ज जो इंसिडेंट है इसको एक लेकिन आप जब सीरीज बना रहे हो ना वो तो सबके लिए होना चाहिए ना नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर पॉलिटिकली अवेयर तो उन्होंने ऐसी बेहतरीन तरीके से इन्होंने एक लव स्टोरी को ब्लेंड किया है अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल बैकड्रॉप सो आई वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटेड विद दैट सेकंड दूसरी वजह तो ये है कि मेरा जो किरदार है माय पार्ट इट्स ये वैसा एक किरदार है कि जिसके इर्द गिर्द बाकी सारे पूरा जो एक स्टोरी है वो इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस पर्सन्स एक्टिविटीज अगर आप स्क्रीन टाइम के बारे में सोचोगे तो शायद स्क्रीन टाइम के मतलब हिसाब से बाकी काफी ऐसे किरदार है जिनकी स्क्रीन टाइम ज्यादा है सीरीज में लेकिन मेरा जो किरदार है जब भी वो स्क्रीन पे आता है हर एपिसोड में तब एक लाइटनिंग सी स्ट्राइक होती है मतलब एक जैसे इट जस्ट कम्स एंड he just does something very major and just leaves so that is always as you can understand that's always a dream thing for an actor right and yeah all of this combined together into me saying like okay हाँ भाई मुझे ये तो मुझे करना है so it was quite exciting and the way they have written it because they also are from that land Rajiv and Satyanshu उन्होंने बहुत पकड़ है सब्जेक्ट पे उनकी तो वहां से उस नजरिए से उन्होंने लिखा है बहुत बेहतरीन हरकतें हैं बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट है ये तो क्वाइट फैसिनेटिंग या आई थिंक उस वक्त तो राजीव जर्नलिस्ट थे जब ये हुआ था 2015 में एग्जैक्टली करेक्ट हाँ करेक्ट तो प्रिसाइसली सो हाँ अंदर से पूरा तजुर्बा जानकारी भी हो बहुत तजुर्बा भी बहुत मतलब तगड़ा रहा होगा उनका हाँ and you're playing Ajay Kanu's character. आई एम प्लेइंग दीपक कुमार
हम्म, ओके ओके। सो वेल, जैसे आपने बहुत अच्छे से भी एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजें आपको पता थी, एंड दैट्स रियली गुड फॉर एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि आपको पहले से उसके बारे में पता है, बिकॉज करेक्ट। आजकल है कि जितने भी सब्जेक्ट्स ओटीटी पर भी आ रहे हैं या एक्टर्स भी परफॉर्मेंसेस देते हैं, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस होती हैं। एंड टू ब्रिंग दैट रियलिज्म इन द कैरेक्टर, अगर कोई सच्ची घटना पे आधारित है फिर तो उसके बारे में पता होना ही चाहिए। बट व्हाट डिड यू डू एक्चुअली, व्हाट ऑल एफर्ट्स डू यू डू इन योर एक्टिंग टू मेक इट मोर रियलिस्टिक, योर I think कैरेक्टर? the first thing that I did was I kind of read up about the incidents. ओके। और दूसरी चीज ये है कि मुझे एक मॉडल चाहिए था कि हम्म। ये बंदा है कैसा। हम्म। तो मुझे ना, मैंने जब व्हेन आई रेड द होल स्क्रिप्ट, राजीव से भी मैंने बात की, सत्यांशु भी मैंने बात की, एंड आई रियलाइज दैट दिस मैन इज एज काम एंड वाइज एज लॉर्ड कृष्णा। हाँ, हम्म। ही इज, मतलब युद्ध में जो जो स्थैर्य होती है ना, मतलब इज एब्सोल्युटली काम एंड कंपोज्ड। और उनको पता है कि उनका मिशन क्या है, उनकी एंड गेम क्या है, एंड में क्या उनको अचीव करना है, बहुत क्लियर है इनके दिमाग में। और ये मिशन को, ये एंड गेम को अचीव करने के लिए उनके पास बाप माँ भाई बहन कोई कुछ मायने नहीं रखते actually. So, because as a child, he has seen the atrocities, जो अन्याय जो हुई है उनके लोगों के साथ, उन्होंने देखा है वो। तब से उन्होंने ठान ली है कि भाई, आई प्रिपेयर माई सेल्फ, आई ट्रेन माई सेल्फ। यू नो, he's been to great universities, he's studied very well. At the same time, he's trained himself to fight in the front line for the Naxal troops. So, uh, he is fighting as Lord Krishna, he's as calm as Lord Krishna. जो युद्ध वो लड़ रहे हैं, that fight is for somebody like a Karn or an Eklavya, or the people who are on the margins, जिनको महाभारत में who are the fallen heroes, who have not gotten their due actually. So ये मॉडल, ये मैंने दिमाग में सोचा, and I shared it with Rajiv, and Rajiv said that yeah, absolutely, this is how you go about it. He doesn't shout, he doesn't scream, nothing, unless he understands that this person has to, you know, excite or inspire 1,000 people in front of him. Rajiv Kumar will never shout otherwise. Sorry, Deepak Kumar will never shout otherwise, actually. So all of this made him a very, very, you know, in today's lingo, I could call it a very cool character, actually. Very, very cool customer. ओ वेरी नाइस। वैसे जब मैंने आपको पहली बार कहानी में देखा था, इट वाज योर डेब्यू आई थिंक इन In Hindi, बॉलीवुड। yeah, of course. Yes. Yes. आपको देखा था तभी मुझे लगा था दैट यू आर वन ऑफ दोज एक्टर जो लॉजिकल रीजनिंग ढूंढते होंगे किसी भी किरदार को करने से पहले। Huh. सो इज दैट? It is true. Of course, it is true. It's not that I don't enjoy a nice little mainstream potboiler which doesn't really care much for logic. I enjoy such films, thoroughly enjoy. Um, और अगर मुझे ये पता होगा कि मैं ऐसी एक फिल्म कर रहा हूँ और वहां पे मुझे लॉजिक नहीं ढूंढनी है मुझे एक्चुअली, तो मैं खुशी खुशी वो कर दूंगा। बट इफ आई नो दैट आई एम डूइंग समथिंग रियलिस्टिक जोन के अंदर कुछ कर रहा हूं, तब मुझे लॉजिक चाहिए होगा, तब मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तब मुझे कैरेक्टर आर्क पता होनी चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। यस, सो व्हाट इज योर प्रोसेस इफ आई मे आस्क यू लाइक ऑफ एक्टिंग? इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस, बट आई जस्ट लुक फॉर, मेरे दिमाग में इस कैरेक्टर का आर्क कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होती है, ये मेरे पास बहुत बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे पास एक्चुअली। एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट, देखिए, एक फिल्म और सीरीज में वी सी अ कैरेक्टर फॉर 2 hours or 4 or 5 hours, राइट? बट दैट डजंट मीन दैट, मतलब जो किरदार की जो जो जिंदगी है वो यहाँ पे खत्म तो नहीं होती है ना। इसके पहले भी कुछ था, इसके बाद भी कुछ होने वाला है। तो इसके पहले जो भी था, दैट ऑल्सो creates this character, that also has a role to play in how this character is. So वो भी मेरे लिए जानना थोड़ा जरूरी होता है एक्चुअली। ओके। वैसे आपके किरदार आपके साथ रहते हैं व्हेन यू लाइक जस्ट प्ले इट एंड यू गो बैक होम, अपने घर पे आते हो? Not really. Seldom, very rarely. I've been working for a very long time, and ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अरे यार, मैंने इतना घुस गया इसमें कि मैं जा ही नहीं रहा था मेरे दिमाग से। ऐसा नहीं होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप एक किरदार के लिए कहीं ऐसी एक जगह पे शूट कर रहे हो जहाँ जो बड़ी बड़ी स्पेशल है, जैसे कि जहानाबाद में आई हैव शॉट फॉर 20 days इन अ रियल प्रिजन, एक जेल में।
तो वहां का जो माहौल है इन जनरल, वो थोड़ा सा आपको बाद में मतलब तंग करने के लिए वापस आ जाता है कभी कभार। वो होता है क्योंकि जेल इज नॉट अ हैप्पी प्लेस, राइट? पीपल हु आर इन पुट इन जेल्स, there's a lot of there's a lot of anger, a lot of sadness, there's a lot of wrath in it. So ऐसा लगता है कि I'm living with those emotions all the time in a jail when you're shooting in a jail. That happened with me in Jehanabad. जो हमें लॉकडाउन में भी एहसास हो गया था वैसे, अपनी रियल लाइफ में भी। Right, like somewhat, yes. हाँ, एट सम पॉइंट। वेल, अगर मैं बात करती हूँ लाइक, ये इससे भी फर्क पड़ता है, हाउ डज दैट मैटर इफ यू आर अ डायरेक्टर ऑल्सो एंड यू आर एन एक्टर ऑल्सो? अरे वो तो बड़ी मुश्किल है यार, मतलब what happens is when I walk into a set and I see a thing being done in a certain way, and मेरे दिमाग में ये चालू होता है कि यार अगर इसको कर रहा होता तो मैं कैसे करता इसको। और कभी किसी चीज में अगर थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया था, अरे यार यार ये रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, ऐसे कर लो ना, मतलब and I feel like telling, but then I immediately had to tell myself that dude, hello, I am here as an actor and I'm being paid as an actor. I've been hired as an actor. तो अपना जो भी डायरेक्टर का जो सेल्फ है वो घर पे रख छोड़ के आ जा। हाँ, सो आई या अनलेस समबडी कम्स टू यू एंड सीक्स एडवाइस, यार ये क्या करूं मैं, ये बताना थोड़ा सा। तो अनलेस दैट हैपेंस आई ट्राई टू कीप माय डायरेक्टर सेल्फ बैक होम एंड अनपैक दैट सेल्फ ऑफ माइन ओनली व्हेन आई एम डायरेक्टिंग, अदरवाइज नॉट। But then you are easily able to like surrender yourself to the director as an actor. नहीं नहीं, मैं बहुत ओपिनियनेड हूँ और मेरे बहुत ओपिनियंस होते हैं और मैं बताता भी हूँ, मुझे ये लगता है वो लगता है ये करके। सिर्फ लंच टाइम के पहले जो सीन्स होते हैं उनमें मैं ओपिनियन नहीं देता क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है तब, सो आई जस्ट वांट टू ब्रेक फॉर लंच एंड गो इनटू लंच एक्चुअली, सो इम्प्रोवाइजेशन भी काम करता है आपके केस में? मतलब जी मैं तो बिल्कुल पूरा बिल्कुल वो। जानना चाह रही हूँ कि एक्टिंग का प्रोसेस क्या है Yeah, it's और become like a class, like an acting class. But yeah, Namita, yeah, that happens. That happens. Obviously, I mean, when you're working with like 60 people in one frame, हम्म, goes without saying that you'll have to improv quite a bit, actually. हम्म। और वो मतलब आपके को एक्टर का भी परफॉर्मेंस इक्वली इम्पोर्टेंट होता है इन बहुत योर एक्ट? important होता है. Absolutely. It's all about give and take. It can't be one-sided, right? It's all about give and take. It has to be, absolutely. Yeah. ओके। अच्छा, मतलब सिंस सुधीर सर वाज आल्सो देयर एंड ही इज like so many years he has spent into the industry, so did you learn from him also, if I may ask? इंसिडेंटली ऐसा हुआ था कि जहानाबाद के लिए जब मैंने जितने दिन भी मैंने शूट किया, आई हैवंट वर्क विद सुधीर सर इन दोस डेज बिकॉज सुधीर सर वाज द शो रनर। Yes. बट ये सीरीज शुरू करने से तुरंत पहले आई जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म विद सुधीर सर। Yeah, it's part of a four film anthology. I did Sudhir sir's film Tapsi and myself, and वो खत्म करके we were shooting for that in Maliabad in UP, and वो खत्म करके I took the flight for Bhopal Oh, where we shot Jehanabad. So what happened was while we were shooting for Swaha, Sudhir sir's film, we would constantly talk about इसके बाद जो मैं भोपाल जा रहा हूँ जहानाबाद करने, उसमें क्या क्या है कैसी है, we would talk about that. So working with Sudhir sir has been an absolutely pleasurable experience because he's a legend by his own right, and my generation of actors and filmmakers have looked up to him as one of the stalwarts. So it's almost like ticking off one point from your bucket list, actually. So it's been like that. अच्छा, अभी ओटीटी के आने से तो मुझे लगता है और ज्यादा रियलिज्म और ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर्स हो गए हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? Oh, totally. I think OTT has opened up space for everyone, for the actors, directors, cinematographers, writers, editors, action directors, because the actions become very different now, and also it has made things very different for the audience. उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अलग हो गया है क्योंकि उनको पता है कि ये फिल्म में हम देखने जाएंगे थिएटर में, अरे यार जो थिएटर वाली जो एक्सपीरियंस है ना उसके लिए जाएंगे हम थिएटर में देखने। और ये जो चीज है ना, ये हम ओटीटी में स्मार्ट टेलीविजन पे देखेंगे, तीन चार दोस्त एक साथ मिल बैठ के, या फिर अपने फोन पे देखेंगे या टैब और आईपैड पे देखेंगे, ये ना ये समझने वाली चीज है। हाँ, so it's a very clear distinction that they have made, I think, and that makes great opportunities for, as I said, for everybody associated with the film industry, I think. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कंपटीशन थोड़ा ज्यादा बढ़ नहीं गया है? मतलब एवरीवन इज कमिंग इनटू द इंडस्ट्री एंड ही और शी वांट्स टू बी एन एक्टर।
देर आर देर आर गुड एंड बैड साइड्स टू बोथ. आप सोशल मीडिया ही ले लो ना, हाँ. सोशल मीडिया के इतने सारे फायदे हैं, लेकिन हम्म. कुछ बुरी चीजें भी तो है ना. People just can just come and say anything without understanding, without any knowledge of anything. They can troll you, they can say any shit about you. So if you are enjoying the good things, you also have to deal with the bad things of a thing. सो आफ्टर जहानाबाद व्हाट एल्स यू आर डूइंग? एक तो फिल्म हो गया, वो जो भी एंथोलॉजी आपने बताया, उसके अलावा? जी, वो है. इसके बाद तुरंत बाद जो आने वाला है वो है पीआई मीना करके एक सीरीज, अमेजॉन हम्म. प्राइम. उसके बाद है मुंबई डायरीज, जो कि बहुत ही पॉपुलर एक सीरीज रही है, सीजन 1. यस. उसके जो सीजन 2 है, उसमें मैंने एक बहुत ही अहम एक किरदार निभाया है मैंने. निखिल आडवाणी जी ने डायरेक्ट की है. बीइंग अ thoroughly wonderful experience. So that's coming after PI Meena. It's going to be Mumbai Diaries season 2. Then I've just finished a film called Notary, with Shabir Boxwala, his company. Um, it's a beautiful comical social drama set in a small town in North India. And I have just finished a supernatural thriller called The Walker House, which was all of it we've shot in the Wales. So ये सब है अभी बाकी आने वाले हैं. आने वाले दिनों में ये सब चीजें आने वाली है. बस सुपर नेचुरल वाला मुझे देखने में थोड़ा सा इशू होगा, बिकॉज मुझे हॉरर सीरीज, मतलब मैं बहुत Oh, I love डरपोक हूँ. horror. I love horror. Yeah. तो आंख बंद कर करके देखूंगी. वैसे वेल Hmm. परम, कैन आई आस्क यू, लाइक डू यू थिंक द the industry has explored the best part of you, or is it yet to come? I think it's yet to come. But yeah, it has explored quite a bit, and I'm very thankful for that. But there are traces in me, there are streaks in me, and there are capacities in me, I feel, Hmm. uh, which are yet to be explored. And as a filmmaker also, na? That's exactly what I mean. Yes. Okay, so any project that you're working on to as a director and a filmmaker, like? I would like to. I have a few plans. Let's see if I can, um, मतलब if I can reality में उनको बदलने की कोशिश और काम चालू है. अभी देखते हैं. Hopefully, there will be something soon. Okay, I'm looking forward to meet you all over again for that too. Thank you so Absolutely, we much. shall do that. Thank you so much, Namita. Pleasure talking to you. Thank you. Bye.